नमस्कार दोस्तों। आज पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में जिस महान शख्स से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उनकी कोई रैग्स टू रिचेस टाइप स्टोरी नहीं है। वो उनके फादर पहले से ही वेल टू डू थे, उनका एग्रो फूड का बिज़नेस था। लेकिन फिर भी जब 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में सारा देश को एक इंडिविजुअल गोल्ड की ज़रूरत थी, 100 करोड़ हमारे देशवासी जो देख रहे थे कि हमें कोई इंडिविजुअल गोल्ड मिल जाए, तो हमें इंडिविजुअल गोल्ड दिलवाया उन्होंने। मैं बात कर रहा हूँ अभिनव बिंद्रा जी की। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ अभिनव बिंद्रा से, जो देश के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उससे पहले 1928 से लेकर 1980 तक हमारी हॉकी की टीम ने गोल्ड ज़रूर जीते थे ओलंपिक में, लेकिन वो टीम गोल्ड थे। इंडिविजुअल गोल्ड सबसे पहले हमें दिलवाया था अभिनव बिंद्रा जी ने। तो आज हम बिंद्रा जी से बात करेंगे, उनसे ढेर सारी हम प्रेरणा लेंगे, कैसे वो जो उन्होंने मेहनत की, राइज़ किया, बड़े यंग स्तर पे उन्होंने कॉमनवेल्थ में सबसे यंगेस्ट एथलीट थे वो इंडिया के उस टाइम पे, और 28 साल की उम्र में वो बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीत चुके थे। 28 साल की उम्र में वो जीत चुके थे। और उसके बाद हम उनके एक अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन, एक एनजीओ चलाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अभिनव फ्यूचरिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी चलाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा अभिनव बिंद्रा जी की और दिनचर्या के बारे में बात करेंगे, कैसे वो यंगस्टर्स को मोटिवेट करते हैं शूटिंग के प्रति, जो उनकी गेम है 10 मीटर एयर राइफ़ल, और इनकी दिनचर्या कैसी रहती है, और उसके बारे में बात करेंगे। उनका जो स्टैटिस्टिक्स मैं थोड़े से आपको बता दूं, बिंद्रा जी का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1982 को देहरादून में। उनकी प्राइमरी एजुकेशन जो देहरादून में भी हुई है, और चंडीगढ़ में सेंट स्टीफन स्कूल में भी वो पढ़े हैं। उसके बाद उन्होंने बीबीए किया है यूएस से। उसके बाद उनने जो हमारे जो मेडल जीते हैं हमारे देश के लिए, वो मैं आपको बता दूं ज़रा। उन्होंने बीजिंग में गोल्ड जीता था, उससे पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2006 में ज़ैग्रेब में हुई थी 10 मीटर एयर राइफ़ल में, उसमें गोल्ड जीता था। वर्ल्ड चैम्पियन और ओलंपिक चैम्पियन काफ़ी समय तक वो जो है दोनों रहे हैं, 2006 2008। उसके बाद कॉमनवेल्थ में उन्होंने 4 बार गोल्ड जीता है देश के लिए, मैनचेस्टर, मेलबॉर्न, दिल्ली, ग्लासगो, और 2 सिल्वर जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज़ जीता है। एशियन गेम में उनका सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज़ हैं। सो मेडल टैली बहुत बड़ी है, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है उनको। तो आज हम बात करते हैं अभिनव बिंद्रा जी से। सो आइए, आपको लेके चलता हूँ अभिनव बिंद्रा जी के पास, आइए। नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, मैं आज बैठा हूँ अभिनव बिंद्रा जी के साथ। तो सबसे पहले मैं अभिनव बिंद्रा जी का हमारे चैनल पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में सर आपका स्वागत है। वेलकम टू यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर सर सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आपने स्पोर्ट्स में शूटिंग ही क्यों चुना, व्हाई डिड यू सिलेक्ट शूटिंग? एंड मैंने आपकी कई वीडियोस देखी हैं, आपने काफ़ी इसके लिए मेहनत करी, जो कि करनी पड़ती है एक एथलीट को। सो टेल अस अबाउट योर हार्ड वर्क दैट यू। देखिए, आई हैड एन एक्सीडेंटल स्टार्ट टू शूटिंग। जब मैं छोटा था, एक्चुअली मेरे को स्पोर्ट्स से ज़्यादा लगाव नहीं था। व्हेन आई वाज अ यंग बॉय अराउंड एज 8 और 10, आई वाज क्वाइट फैट एंड आई हेटेड कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। सो मेरा ओनली टैलेंट रियली वाज टू मिस फिजिकल एजुकेशन क्लासेस एट स्कूल। बट वन फाइन डे आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू माय फर्स्ट शूटिंग कोच, कर्नल ढिलन, हु लिव्स इन चंडीगढ़ सेक्टर 35, एंड मैं गया अपना फर्स्ट सेशन, शूटिंग सेशन करने, एंड आई रियली फेल इन लव विद द स्पोर्ट, एंड आई लव द एलिमेंट्स ऑफ द स्पोर्ट। ऑफ कोर्स कर्नल ढिलन ने मुझे काफ़ी मोटिवेट भी करा। ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन मोटिवेटिंग मी. So that is how basically I started. I had a reluctant start to sport. It was not a natural, I was not somebody who was naturally gifted in sport. I was not athletic, I was not competitive, but I had one talent, and my talent was to have, was my ability to work hard. शुरू से ही मैंने at the age of 12 when जब मैंने shooting शुरू किया, hard work was something which came quite naturally to me, and maybe that was something which was ingrained to me as a young boy in what I saw in growing up around me, and what I saw, how my family used to work hard, my parents used to work hard in their given field, and unko dekh ke maybe that is something which I was able to also ingrain in myself very early on in my career. And that is what I pretty much did. मेरा काफ़ी लंबा career रहा, 22 साल I was a competitive athlete, and throughout this whole 22 years, it was really about working hard, and it was about putting your best foot forward every day, trying to become better than what I was yesterday. And that is what the whole journey was all about. Sir, at the age of 15, I've read that you participated in your first Commonwealth, and thereafter you won Commonwealth medals, thereafter you won Asian Games, World Championship, and then finally Olympic. So how is the journey from Commonwealth, Asian Games to Olympic? How do you describe it? You have been in Olympic for 5 times. You have participated in Olympics.
So how did you see this journey? देखिए, of course the Olympics is the epitome. It is the epitome of world sport. It is the event. Every athlete जो भी sport में जाता है, they all aspire to be an Olympian, and of course to maybe if you're fortunate enough to become Olympic champion. It is a very tough field because अराउंड ओलंपिक गेम्स में 30 डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं, 10,000 एथलीट दुनिया का पार्टिसिपेट करता है जो क्वालिफाई करता है. इट्स नॉट कि कोई भी जा सकता है ओलंपिक गेम्स में, और उन 10,000 एथलीट्स में से खाली 300 एथलीट गोल्ड मेडल्स जीतते हैं. So the numbers are very, very less in that respect. So of course this journey what you talked about was a very fulfilling journey. Every step was important, and every step was a building block to the bigger success. But frankly, every competition, whether it be a Commonwealth Games, whether it be a national championship, or whether it be a state championship, while the level of competitors may be different, but for you personally, for me personally, every competition was challenging. ये नहीं बोल सकते कि आप मुझे अब कल नेशनल चैम्पियनशिप में भाग लेना है और मेरे लिए बड़ा आसान होगा, क्योंकि माय बेंचमार्क वाज माई सेल्फ. मेरे को अपना बेस्ट देना है, and to be able to give my best, I wanted to always perform to a world class level. That was the goal. It was not goal ये नहीं था कि we just want to win a medal. That is a byproduct of performance. What was the real goal was to always produce world class performances. And to produce a world class performance, चाहे आप वो एक स्टेट लेवल पे करो या एक ओलंपिक लेवल पे करो, हमेशा मुश्किल रहेगा. The level of pressure will of course be different. Maybe at an Olympic level, the level of pressure will be even more. However, demanding the best out of yourself, if you want to achieve a level of performance which can be compared to world standards, it will always be difficult. So every competition was tough, was challenging. Of course, the level of pressure is always different. But आपने 3-4 competitions का नाम लिया, where you're always representing your country. And when you're always representing your country, you also have additional pressure and responsibility that you also have to take on your shoulders. It's not just you're representing yourself, you're representing 1.3 billion Indians, which is a big responsibility. So all in all, every competition was special, every competition was challenging, and they all had their different struggles. Nothing came easy. So you come from a well-to-do family. Your father is an agro food business, and you have got your training in Germany with the best of the trainers. In fact, you were in Germany a few days back also. I've seen your tweets. So how do you see Germany athletes, Germany training with respect to shooting and the present Indian conditions? Like Indian people are also right now Indian Paralympic shooter. She has got a gold medal in Paralympics also. So how do you see the difference of training? देखिए, I think firstly on regards to Germany, it has always been a very big central hub for world shooting. The world shooting body is based out of Munich. Germany का एक बहुत बड़ा culture है for shooting, because it is at a club level. Every village in Germany will have a shooting range. It is the second largest federation in Germany after football. Football being the most popular there. So second largest sport in terms of membership is shooting. So all equipment manufacturers are based out of Germany. So एक किस्म का, it is a kind of a hub, and there's always been a lot of knowledge available there in terms of getting very high quality coaches, having access to good infrastructure, and also most importantly having access to equipment easily, because जब आप एक sport like shooting में, it is a very technical sport, और ये आपको हमेशा बहुत fine tuning करनी होती है with your gun, with your ammunition. वो एक constant process होता है. So just to have access to all these manufacturers has always been an advantage. बहुत कुछ बदला है in the last 20 years. जब मैंने shooting शुरू किया था, I started with Colonel Dhillon under a mango tree. That was my start. अब अगर एक शूटिंग को, एथलीट को शुरू करना है शूटिंग इंडिया में, नाउ दे हैव एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंजेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कई दिल्ली में देखे तो इट इज़ द
There are world level competitions which are being held, and there are many shooting ranges across different parts of the country now, which are world class, so infrastructure has improved tremendously in the last 20 years. The level of पार्टिसिपेशन हैज़ इम्प्रूव्ड मैनिफोल्ड. देखिए, जब मैंने शुरू किया था हमारे नेशनल चैम्पियनशिप्स में भी 200 लोग पार्टिसिपेट करते थे. अब इन आवर नेशनल चैम्पियनशिप्स वी हैव क्लोज टू 10,000 एंट्रीज. So the sport has grown in that respect. Also the level of knowledge, जब मैंने शुरू किया था, it was not available at all in India. I always had to go abroad. Now the quality of knowledge is also improved to a great degree in India. So all in all, I think the whole ecosystem of the sport has improved tremendously. We've had great success also in sport, not just the Paralympics, but at world level competitions, India has dominated at a lot of levels. Okay, the last Olympics was kind of a disappointment where we did not win a medal, but we had many good shooters going into the competitions who had a very fair and realistic chance of winning a medal. So the potential continues to remain. I'm hopeful कि अब अगले games Paris में होंगी, and we'll be able to win a few medals there. But all in all, I think the sport has grown tremendously. Sir, and sir, can you describe the exact moment आपको realize हुआ था when you won the individual gold medal for the first time in the country? पिछले 1928 से लेके जब हम हॉकी जीत रही थी, हमारी एक टीम जीत रही थी, लेकिन इंडिविजुअल गोल्ड जब आपने जीता, डू यू रियलाइज कि आपने कितनी बड़ी अचीवमेंट? वेल देखिए, सबसे पहले जो मेरा माइंडसेट था वो अ माइंडसेट विच वाज डिटैच्ड फ्रॉम आउटकम्स. जो मेरा गोल था वाज टू बी द बेस्ट दैट आई कुड बी एंड टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल एंड टू शूट द बेस्ट दैट आई पर्सनली कुड शूट, बिकॉज खाली वो ही मेरी कंट्रोल में था. विनिंग इज ऑलवेज नॉट इन योर कंट्रोल. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ your competitors do and how everything falls in place on that day. So there was a great amount of detachment. So I think जब मैं जीता that gold medal, I think the greatest emotion what I felt was that of relief. That मैंने इतना टाइम, इतना समय, इतना एफर्ट लगाया, कितने सालों के लिए लगाया, and that then culminated in that victory. So the greatest emotion was of relief कि for so many years I had worked hard and that had got me the result. So recently I read a news that in Commonwealth, the coming Commonwealth, shooting has been again incorporated. In last Commonwealth it was dropped. So ये fluctuations क्यों आती हैं? Why these fluctuations? देखिए, I think it in the Commonwealth Games, shooting is not a core sport. It really depends on the organizing committee which sports they want to put in. And जो last Commonwealth Games हुई थी, जो drop हुई थी, I think they were wherever they held in कहाँ हुई, in UK में हुई थी अभी. So those Commonwealth Games originally had to happen in South Africa. Then South Africa dropped out of it and the games went to the UK, to Birmingham, I think. And then they just chose sports which they could easily do. Costs, they wanted to keep costs down, things like that. But I'm glad that the sport is back, and that's a very good sign, and that the Commonwealth Game, there will be shooting in 2026, and I'm sure that our shooters will do very well. Sir, tell us about the activities of your NGO. You are running one NGO, Abhinav Bindra Foundation. That's correct. And tell us about the activities of your company, Abhinav Futuristics Private Limited. Well, the Abhinav Bindra Foundation is my primary outreach to sport in India. Sure. It is my way of giving back to sport. Sport has given me so much in my life that I am morally obligated to give back to society. हमारा जो काम है is in 3 pillars. Our first pillar is of intervention. We give scholarships to about 80 odd very young athletes between the ages of 12 and 16. The scholarship is called STEAM, Science, Technology, Engineering, Analytics and Medicine. And we incorporate all those elements into grassroots level training through our networks of centers that we set up, which are very cutting edge in nature. So that is the first intervention. The second part of intervention is a program called Sports for Her. It is a program dedicated to the female athlete, where we've set up a platform for female athletes to empower them, to foster more participation of girls in sport, but also to empower them with knowledge, specific knowledge, health related issues,
which a female athlete encounters during the course of her career. The third project under intervention is a project called Sport for Life. Here we offer 100 free surgeries to athletes who get injured. Many athletes get injured, right? Even at the grassroots level, they get injured and they have no access to proper medical attention. They don't have the resources, or most importantly, they don't have the knowledge. So through this program, we offer about 100 free surgeries to athletes. Second pillar is that of education, where we've set up a Sports Science and Medicine Institute where we give bachelor's and master's degrees in physiotherapy and sports science to start with. Second project under education is that of leadership in sport, where we, in partnership with the University of Loughborough in the UK, we have a program for administrators in sport, which empowers them to incorporate best practices into sport. The third element under education is athlete mental health, something that I work very closely with the International Olympic Committee. I'm on their working group, and we try and bring in all those resources for athletes' mental well-being and mental health. The third pillar is using the power of sport for social good. Our current program is bringing the Olympic value education program into India. You know, sport जो चीज़ है, it is not just about winning. जो main power of sport जो होती है, on how sport can shape society. हमारी जो society in India is a very young society. Our demographic is very young. 50% of our population below the age of 25. All struggling to a great degree, to a great extent, to incorporate values. And there is no better way than sport to incorporate values. Sport teaches you how to win, but importantly, it teaches you how to lose. It teaches you respect. It teaches you friendship. It teaches you excellence. It teaches you teamwork. It teaches you a lot about finding your own self-respect, respecting rules. It teaches you honesty. It teaches you integrity. And through this program, it is an experiential learning program. Young children, our current project is being run in Odisha, 100 schools, 100 government schools, 32,000 kids under this program, where they do these activities and basically imbibe sporting values. So that is something which we're doing. So that is a basic overview of the work of the foundation. In regards to my company, we work in health to a great degree, transitional care, in India, mostly healthcare, at least private healthcare and also governmental healthcare is completely focused on critical care, right? At least private is very much, the model is only critical care. But most importantly, when you get a surgery तो एक aspect है, but post care and transitional care is even more important. If you want the surgery to be successful, if you're having a knee replacement, for example, the sort of rehab that you have to do and the care that you have to take to post surgery to get you back is important. So that is the area that we focus on. We've set up centers across the country which work in this aspect. We also work in bringing the best technologies from world over into different setups across the country, whether it be governments, whether it be private bodies. So that is pretty much the work we do. We also work in sport, where we help set up sports science and medicine institutes, because sport always has the best in class. An athlete's life is very unique, because जब athlete को injury होती है, the demands are very different, because the athlete has to get back very quickly, and also get back to a very high level of performance. So the best practices in sport, the technologies in sport that are used in this phase, we of course bring that in, but we also use that as an inspiration to take it to regular people, because that really is the best in class that you can get anywhere in the world. So if somebody is having a knee issue, an ACL or a knee replacement, how do you get that person back to normal life? That is important. And then there we, of course, take the inspiration from sport, because sport always has cutting edge methodologies available. So we bring that from various parts of the world.
I've read about you, sir. During the course of your journey in the sports, you have also seen injuries. One of that injury was, I think, life threatening also, if I'm not wrong. So how did So this? yeah, I had a career-threatening back injury. I also had neurological issues, and one of the reasons why I have gotten into this field is also my experience that I had in sport. Because when I was injured, I was not able to find the best possibilities in India to get back. और मुझे हमेशा कहीं बाहर जाना पड़ता था to get the best possible treatment so that I could get back to a very high level. So that was also, I saw that there is a big gap in India, and it is an area which I think requires a big amount of impetus. So that is what, that is how I felt, and that is how I also got into this field. So tell us about your other interest areas. How do you spend your day? Your hobbies? Well, currently I am, of course, I lead a busy life. Majority of my time is dedicated to my work activities, dedicated to my foundation activities. I, of course, enjoy traveling. I enjoy food. I have 4 dogs who I'm very fond of. So I have a niece and nephew who I'm very close to. So all in all, this keeps me very engaged and busy. So your message to the youngsters for the shooting also and other sports also? Well, my only message would be to, that whoever is chasing excellence in whatever field, whether it be sport, whether it be medicine, whether it be law, whether it be government service, anybody, I mean, chasing excellence. I think it's always a matter of perseverance, of really staying true and honest to the goals that you set. Because there will be failure, there will be difficulties that you face, there will be many challenges that will come your way. But that is a time that you cannot give up. That is a time where you have to remain very honest to the goals that you've set up for yourself. And you can only reach these goals by achieving self-respect. You can achieve self-respect by working hard every day to try and be the best that you can every day. Don't fall short of pushing yourself every day to become better at whatever you are doing. And basically, before you go to sleep, you look at yourself into the mirror and ask yourself, did you do your best today? And if the answer is yes, you will always have a good night's sleep. So, and at the end of the day, that's what's important. So, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सर. Many thanks to you for giving us a valuable time. It was pleasure talking to you. मैंने जितना आपके बारे में रिसर्च की थी, जितने आपके बारे में मैंने पढ़ा था, आप एक्चुअल में उससे भी ज़्यादा फ्रेंडली और मतलब बातचीत में बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू. तो दर्शकों, ये हैं अभिनव बिंद्रा जी, जिन्होंने 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की जो आशाएं थी 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में पूरी की, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हमारे देश को जिताया. और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सर और तरक्की करें, हमारे देश के युवाओं के लिए सर प्रेरणा है, आगे भी प्रेरणा रहेंगे. मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू वंस अगेन सर. थैंक यू सो मच. सो फ्रेंड्स, मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਅਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨਾਲ. ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਮੈਂ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਐਫਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਓਲੰਪਿਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਣਾ. तो सर, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸਰ. ਇਹ ਅਭਿਨਵ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 1995 ਤੋਂ 1995 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ. ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਰਨੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਬਾਊਂਡ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਬੈਸਟ ਕੋਚਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਬੈਸਟ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੈਸਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਯੰਗੈਸਟ ਮੈਨ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਜਦ ਈਅਰ 2000 ਸਿਡਨੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਥਨ ਓਲੰਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਔਰ ਢਿੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਵੋਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਇੰਜਰੀ 1 ਸਾਲ ਛੱਡਤੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਜ਼ਾਗਰੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਏਥਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੀਵ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਗੋਲਡ, ਗੋਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਤਿਆਰੀ ਜਰਮਨ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾਂਡੋ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੀਇੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੀਜਿੰਗ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ 11 ਜਗ੍ਹਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਏ, 11 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਰੱਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਆਂ ਚੱਕ ਦੇ। ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੋ 116 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ, ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ, ਵਿਦਿਨ 1 ਆਵਰ 600 ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਰ ਦੇਅਰ ਐਟ ਮਾਈ ਫਾਰਮ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, 1 in a billion।
गल ही कोई सी तो वही गल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तुहानू मिल के बड़ा अच्छा लगे। तो तुहाडी सारी कंट्रीब्यूशन है, जो पेरेंट्स कंट्रीब्यूट ना करन तो बच्चे कुछ नहीं कर सकते। सो तुसीं सारा कंट्रीब्यूट किया, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल गल करन वास्ते। नहीं, मैं एक गल कहूँगा, ठीक है, हर पेरेंट अपने बच्चे वास्ते करता है, करता भी है, करना भी चाहिए, लेकिन अखीर दे विच जिहड़ा बच्चा है उही जांदा अगे, उन्हों ही फेस करना है, दुनिया नू फेस करना है, उन्हें ही जाके बंदूक चलानी है, उन्हें ही जाके जितना है, उन्हें ही जाके सट्टां खानी है। तो यह तो फिर जिहड़ा क्रेडिट है वो बच्चे नू ही जाना चाहिए, वो क्रेडिट प्यो या माँ नू नहीं जाना चाहिए। दैट इज़ माई थिंकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सत श्री अकाल सर। तो फ्रेंड्स, ये थी मुलाकात अभिनव बिंद्रा जी के साथ। उन्होंने बताया कि किस तरह से शूटिंग उनको शुरू से ही बहुत पसंद आई गेम। 12 साल की उम्र में उन्होंने बताया उन्होंने ढिल्लों साहब के अंडर शुरू किया, जो उनके पहले कोच थे। उसके बाद कैसे उन्होंने धीरे धीरे प्रोग्रेस की और कैसे वो ओलंपिक तक पहुँचे, क्या उनकी फीलिंग थी एग्जैक्टली ओलंपिक मेडल जीतने के बाद। अभजीत बिंद्रा जी जो उनके फादर हैं, उनके साथ भी मुलाकात की मैंने, उनकी फीलिंग्स जानी, क्या उनकी प्रेपरेशन रही है, कितनी उन्होंने मेहनत करी है अपने बच्चे को इस स्तर पे लाने की कि वो गोल्ड जीत पाएँ। दिग्पाल रनावत जी जो उनकी फैसिलिटी के इंचार्ज हैं, जो मैनेजर हैं बिंद्रा जी के, उनसे मुलाकात की। उन्होंने मेरे को अपनी पूरी फैसिलिटी दिखाई और क्या जो मशीन्स जो फ़ॉरेन से आई हैं, बहुत ही अच्छी मशीन्स उन्होंने दिखाई जो डिफरेंट एथलीट्स यूज़ करते हैं, जो एक एक बड़ा मिन्यूटली उनको चीज़ें बताती है वो सारी मशीन्स के किस प्रकार से वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। ये मशीन्स बिंद्रा जी खुद भी यूज़ करते रहे हैं, जब वो गेम खेल रहे थे देश के लिए, तब वो खुद भी यूज़ करते रहे हैं। नीरज चोपड़ा जी ने मशीन्स यूज़ करी हैं, फोगाट जी ने यूज़ करी हैं। तो ये उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सारे देश में इनके 15 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये अत्याधुनिक मशीन्स जो हैं, वो जो इम्पोर्टेड मशीन्स हैं वो यूज़ करते हैं एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। और इसके अलावा अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन जो इनकी एनजीओ है, जिससे बिंद्रा जी ने बताया कि दे आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, सो उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया कि कैसे वो एथलीट्स को हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, कैसे वो एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं काम और फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। सो मेरी आज की मुलाकात बहुत ही सक्सेसफुल रही। सो आगे भी मैं किसी अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे ही जिनसे मोटिवेशन मिलती हो उनके साथ मुलाकात करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सबका चैनल पर जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।